Assalamualaikum. Basically, in this video, we are going to start the multiplication and division of algebra. And in my last video, basically, I discussed how we have to add and subtract in the algebra, and there are some certain different between addition and multiplication. So, first, let's get start with the basic principles of the multiplication of algebra. So we are doing what? Multiplication. Okay. For multiplication means any number with any variable, any number with any variable or power can be multiplied. Okay. So this is very simple. Like आपके पास कोई भी चीज़ है, कोई भी नंबर है, कोई भी वेरिएबल है, कोई भी पावर है, वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी और हमेशा मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो पावर्स होती हैं वो हमेशा ऐड होती हैं. ठीक है, तो आपको याद रखना है पावर्स इन मल्टीप्लिकेशन, लाइक जो हमने इंडिसीज में देखा था तो वही होगा. लाइक पावर्स इन मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज ऐड अप. ठीक है, पावर्स हमेशा क्या होंगी? ऐड होंगी. सो लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, 2x multiply by again 2x. So look, this 2 times with this 2, it will give you 4, 2 to the 4, and x time x means here is the power 1, कुछ भी नहीं है तो इधर भी power 1 है. So x multiply by x and their powers have to add up with each other, so 1 plus 1, that is 2. So the answer would be 4x square. Like if I gave you the other example, 5x plus 2x cube. So look, 5 to the 10 हो जाएगा. एंड नाउ आपके पास जो यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स हैं उनको आप ऐड कर देंगे. द पावर x की जो 5 के साथ वो पावर 1 है, एंड द पावर विथ 2x इज द 3. सो ये 3 और 1 आपस में एडअप होके x4 हो जाएंगे. ओके, ये आपके पास हो गई. एंड अदर बेसिकली प्रिंसिपल, जब आप कोई भी साइंस को मल्टीप्लाई कराएंगे तो उनका मल्टीप्लाइड आंसर आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, व्हेन ओके multiplying sign, okay, multiplying signs, write the multiplied, write the multiplied sign. ओके, सॉरी यहाँ पर एडिशन का मैं था, ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा इधर. ओके, अगर मैं यहाँ पर आपके पास इस एग्जाम्पल को देखूं, -2x मल्टीप्लाई बाय -4y. ओके, तो फर्स्ट आपके पास माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, so this minus and this minus multiply with each other, so minus minus it will give you plus. तो प्लस आ जाएगा, तो मल्टीप्लाइड लिखना है. यू डोंट हैव टू राइट दी साइन ऑफ द ग्रेटर वेरिएबल और नंबर. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर, जब आप किसी भी दो नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर साइन आपस में उनके प्लस माइनस करने होते हैं तो आपको उसका ग्रेटर साइन लिखना होता है ताकि ऑपरेशन कोई भी हो रहा हो. बट इसके अंदर आपको जो आपने साइन मल्टीप्लाई करवाए हैं, आपको उन साइन का मल्टीप्लाइड वर्जन लिखना पड़ेगा. दैट इज -2 एंड -4 का साइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप प्लस आ जाएगा, एंड 2 4 द 8 अगेन, एंड देन वेरिएबल्स डिफरेंट है तो इनकी पावर्स ऐड अप नहीं होंगी, तो जस्ट आप इनको x टाइम्स y, तो ये xy इस तरीके से आ जाएगा. ओके, एंड अदर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, 4z मल्टीप्लाई बाय -2. ओके, सो इधर साइन कुछ भी नहीं तो प्लस हो जाएगा 4 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, एंड 4 2 ज़ा 8. इधर 4 के साथ z वेरिएबल है, इधर कुछ भी नहीं है तो जस्ट आप यहाँ पे z लिख लेंगे. तो यही चीज थी जो कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये रूल्स को फॉलो करेंगे. ओके,
नाउ अगर हम आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल बताएं इसके अकॉर्डिंगली कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं हम लोग। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, जस्ट इसको और इससे मल्टीप्लाई करवा दें। सो 7 टाइम्स 4 इट विल गिव यू 28 xy मल्टीप्लाई बाय 2x। अगेन ये 2 एंड 28 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो जब आप इनको जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है। सो जस्ट आप इसको जब सिंपल मल्टीप्लाई करवाएंगे, दैट इज 28 टाइम्स 2, आपको यहाँ पर मिलेगा 56, ठीक है। तो आई एम डूइंग द डायरेक्टली, दैट इज 56। और ये इधर x है और इधर भी x है, इसकी पावर 1 है 28 के साथ, 2 के साथ भी पावर 1 है, तो x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो x स्क्वायर, और y हमेशा हमारा सेम एवरेज रहेगा, क्योंकि सामने जो भी आपके पास टर्म थी उसके साथ कोई y नहीं दिया हुआ था। सो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट 1। ओके, मोस्टली आपके पास, और मल्टीप्लिकेशन समटाइम इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ ब्रैकेट्स। अगर मैं यूं लिखूं तो इट इज ऑल्सो मीन्स दे आर टाइम्स विद ईच अदर, ठीक है। तो 7 टाइम्स 4 दैट इज 28, और x जो होगा एज इज लिखा जाएगा। तो ब्रैकेट्स ऑल्सो indicates the multiplication। Okay, so the second example, okay, so just first multiply minus 7 with this x, and this x is a positive, so minus 7 plus x, so equals to minus plus minus 7x is 7x, and again you have to use the bracket because minus 2x is also times with this 7x, so minus minus equals to plus 7 to the 14, and x times x is x square, because the power of x with 7 and the power of x with 2 is 1 1, so the powers add up and they form square. So this is the answer for part number 2. Now if I am going to do the part number 3, okay, first time these two, 4x multiplied by y, so 4xy, now multiply by minus 2. So the sign with 4 is positive and the sign with 2 is negative. So this plus and this minus will give you the minus sign, and 4 to the 8. Okay, this times with this 2, 8, and the remaining variable it give you xy. So minus 8xy is the answer for part number 3 or example number 3. Now if you look the example number 4, and here basically hmm okay, okay, first time these two, 5 to the 10, x and x times it will give you x square, multiply by 2x square. Now 10 times 2 it will give you 20, and here the power of x is squared, and here the power of x is also squared, so 2 plus 2 is 4, so 20x4 is the correct answer and right answer for part number 4. Now if you look this example, example number 5, that is
Okay, so 7 times 4 is 28 and y times x is xy. Okay, sometimes um, bracket and multiplication both are used like this. So just you have to time this. 3 times 4 is 12 and times x it will give you 12y. So this is the answer. So now basically in this video I just focused on the simple multiplication of the algebra, and now in the next video I'm going to mix the addition, subtraction and multiplication. Then you have to follow the certain rules to solve those kind of questions. So if you like this video, so subscribe my channel and like and also share with others. Okay, Allah Hafiz.